We are shifting focus to another high drama story that has been playing out since morning. BJP leader Tajinder Bagga was arrested by Punjab Police from his residence in New Delhi. Now, as per police reports, around 50 cops in 10 to 12 cars came to arrest the BJP leader. He was booked after Aam Aadmi Party leader Sunny Singh had filed a complaint against him, alleging that Bagga had made some provocative statements and attempted to spread enmity between communities in the society. Now, the big twist in Bagga's arrest is that now Delhi police has escorted Bagga back. This after the convoy that was of Punjab Police that was taking Bagga from Delhi to Punjab was stopped in Haryana. Then a DCP level officer from Delhi reached Kurukshetra where the convoy had been stopped, and after intense deliberations he was brought back to Delhi. But even as legal drama plays out, at one end there is the political aspect as well, and there is a personal aspect. The family of Tajinder Bagga, the father earlier this morning went out and said that his son has been abducted. The mother spoke to Times Now and said that Bhagwant Mann as Chief Minister should not abuse law. We'll play out those reactions, but right now for the latest, I'm joined by Gurpreet. Gurpreet, we know that Tajinder Bagga has been taken back to Delhi, but there is also a case that is likely to come up in Punjab and Haryana High Court. What is the latest that you can tell us about that? Well, yes, of course, our petition has been filed by the Punjab government saying that whatever the Haryana government has done, that is illegal, and now the argument has already been started. One side, we have seen that from Punjab government, a lawyer is present there. From the central government, even from the Delhi, Satyapal Jain, the top lawyer, he has presented in the court, and what we have learned inside, the videos are being shown to the honorable court so that the ground situation should be given to the honorable court so that decision should be taken. So let's see, because every lawyer has his own plea. As of now, what we have seen that the Punjab government claims that there is no illegality. At the same time, we have seen that Haryana government says that they are not supposed to hand over Tajinder Bagga to Punjab government, but they had handed over Tajinder Bagga to Delhi. So arguments are going on. So let's see that what will come out. But as of now, the discussion has off. Right. Argument from all the sides of the lawyers. They have started inside putting up their points. So let's see that what will come out. Right, Gurpreet. Intense arguments going on where Punjab Police is defending its action, and we'll get to that. But first, let's play out reaction coming in from Alka Lamba. बीजेपी युवा नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी दिल्ली में होती है, लेकिन भूचाल 3 राज्यों के पुलिस की लड़ाई से मच गया है। 3 राज्यों की पुलिस अब इसमें इन्वॉल्व है। पंजाब पुलिस दिल्ली पहुंचती है। अब दिल्ली पुलिस जो है वो काउंटर एफआईआर पंजाब पुलिस पर की हुई है, और इस सब के बीच हरियाणा पुलिस भी अब आगे पहुंच चुकी है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अलका लांबा, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, हमारे साथ है। अलका जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल अपने एक राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ लगातार कर रहे हैं, ये बिल्कुल रुकना चाहिए। डरती नहीं हूँ, मुझ पे भी एफआईआर हुई, पुलिस रोपड़ ने बुलाया एसआईटी के सामने पेश होने के लिए, पेश होने गई। बोला 26 को आओ, 26 को गई। बोला 27 को, 27 को गई। बोला अब नहीं, 4 जुलाई को आइएगा क्योंकि फाइल कोर्ट ने दे दी है। डरती नहीं अलका लांबा या कांग्रेस, लेकिन पंजाब के लोगों को देखना होगा कि जो ताकत आपने पंजाब में भगवंत मान को दी है, वहाँ की पुलिस, कानून व्यवस्था, जिम्मेदारी है कि वहाँ के लोगों को सुरक्षा दे। वहाँ पर जिस तरह की भी हिंसा अभी हम लोगों ने पटियाला की सड़कों पर देखी, पत्रकारों पर हमले देखे, गैंगस्टर वॉर देखा है, नशा माफिया वापस आ भी है, उन सब पे पुलिस का जो है समय लगना चाहिए। पर दुर्भाग्य की बात है कि वो पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के इशारों पर राजनीतिक विरोधियों को साध रही है। उसका नतीजा यह हुआ कि पंजाब पुलिस एक तमाशा बनकर रह गई है। आज हमने देखा कि जब पंजाब पुलिस यहां आई तो दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण के मामला दर्ज कर लिया। यहां से अगर पंजाब पुलिस दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में घुसती तो हरियाणा की पुलिस ने अब उनको रोका हुआ है। पंजाब के बड़े Priyank, arguments are happening in the court with both Delhi and Punjab police alleging that the other side is the one that is in contravention of the law.
Yes, Adi, that's an argument which has been given by the prosecutors from the Punjab Police that this particular action should have been averted. What if the Punjab Police could have also filed an FIR against the Delhi police officers? But the fact remains that before this legal argument can actually conclude before the High Court of Punjab and Haryana, they are in Chandigarh. The person against whom these FIR was filed and all these actions was happening, Tajinder Singh Bagga, is already on his way from Kurukshetra towards the national capital. But before that, it would be very important to see, Priya, that whether the Delhi police will officially arrest these two officers from the Punjab police who are still detained at this Janakpuri police station. We are waiting an official response from the Delhi police because those officers from the Punjab police who were taking these people back to Punjab have been released by the Haryana police. But what will be the action which will be taken against these two senior officers from the Punjab police who are here, who are posted in Mohali? It's going to be very important to see. See, basically the fight in between these three state police has led to a scenario that the men in uniform are being questioned because of the political fight which is happening among the various political party. Questions are being raised against these police personnel who were doing their duty. Whether they were politically motivated or not, that's a matter can only be decided by the courts. Right. But the fact remains that in the tussle in between these political parties, these police personnel are stuck. Two of them are still detained at this Janakpuri police station. Right, Priyank, we will come back to you on details of what happens in the court eventually through the course of the day, as well as what lies ahead for Bagga as he comes back to Delhi. We take a very quick break right now. Welcome back. Breaking developments coming in from Punjab and Haryana High Court, where fierce arguments are on between Punjab Police and the Delhi Police, both sides defending the crackdown, the action that has been undertaken by them. कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन ये है कि हरियाणा के बाहर नहीं जा सके तजिंदर बग्गा। अब आगे क्या होता है मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलती मैं उसके बारे में कोई बयान नहीं देना। वो वापस आ रहे हैं यहाँ पर लाए जा नहीं, उड़ती बातें हैं, उसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है। सुबह जो कुछ हुआ उनके साथ थोड़ा बयान करेंगे। सुबह का तो यार बयान कर चुका हूँ कई बार। कुछ लोग घर में घुसे और उसको घसीट के ले गए। ठीक है, हमारे साथ बात करेंगे। मौज किया, मुंह पे, मेरे गले पे लगा, ये काम हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए बग्गा जी के फादर, क्या हुआ, थोड़ा सिलसिलेवार करके बताइए। सुबह क्या हुआ, एक बार क्या हुआ? सुबह आप लोग कहाँ थे, फिर क्या हुआ? जी बताइए। सुबह दो लोग पहले घर में घुसे, दो लोग से हम लोग टॉक करने लगे। इतने में पीछे से दरवाजा खोल के धड़ाधड़ 10-15 बंदे फिर आ गए अंदर। उन्होंने तजिंदर को खींचना शुरू कर दिया। तजिंदर ने पहले थोड़ा सा आनाकानी की, फिर उसने कहा मैं चलता हूँ, आप मेरे को ले चलिए, आप मेरे को सर पे कपड़ा बांध लेने दीजिए, पगड़ी बांध लेने दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं सुना, उसको खींच के ले गए। आपके साथ हाथापाई की बात आपने मैंने जब मोबाइल अपना निकाला तो उन्होंने मेरे से मेरा मोबाइल छीना, मेरे मुंह पे मारा, मेरे गले ऐसे पकड़ के मेरे को नीचे दबाया और उससे मेरे को यहाँ गले पे भी चोट आई है, मेरे कान में भी दिक्कत आई। आपके कंप्लेन पे एक FIR भी हुई है, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है। जी जी जी। क्या है वो? अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था आपने? हाँ, तो इसको आप इसको क्या संज्ञा देते हैं? आप इसको क्या संज्ञा देते हैं, आप ही बताइए। बट आपके बेटे के खिलाफ 5 बार नोटिस भी हुआ था, तेजिंदर क्यों नहीं जा रहे थे, ये भी सवाल उठता है। ये तो वही जवाब दे सकता है। पंजाब पुलिस को क्या बोलेंगे आप? कोर्ट में जवाब देंगे या मीडिया के जरिए बोलेंगे आप पंजाब पुलिस को? कुछ नहीं बोलना, मेरे को केजरीवाल को बोलना है कि ये हमारा आपके साथ शुरुआत है। अब आगे क्या? हाँ, अब आगे है कि हम उनको चैन से नहीं बैठने देंगे। We heard the statement coming out from the father of Tajinder Singh Bagga, who is very straight of it, saying that whatever has to be said will be said in the court, and there will be a petition which will be moved from the Bagga's family side to fight against all those things which has been said against Bagga, and the legal battle will be fought by his father. Priyank Tripathi.
That was Preetpal Singh. Remember, he is the one who went earlier this morning to Janakpuri police station to file a missing complaint. Now, there is also a controversy around that complaint having been filed because the Punjab police, and there are political sections also who are questioning the normal procedure being that if there is a missing complaint filed, then police waits for around 24 hours before converting it into an FIR. That did not happen in this case. Delhi police immediately converted Preetpal Singh's complaint of his son having been abducted into an FIR. Now, there are also conflicting versions coming out in the court where Punjab police has been insisting that they have done no wrong. They have followed the protocols to the T. They informed Delhi police as is required of them as per the procedure before coming into Delhi to arrest Tajinder Singh Bagga. But Delhi police insists, they are steadfastly refuting that argument. They are saying we were not informed. None of our officials accompanied the team that had gone to Tajinder Singh Bagga's house when he was arrested. The family claiming that there was a horde of policemen who came into the house. There was no resistance. Still, they dragged Tajinder Singh Bagga out of his house. Right now, he has been brought back to the national capital from Kurukshetra, where the Punjab team that had taken him was on their way to Punjab, had been stalled by Haryana police. Then a DCP level officer from Delhi had gone to Kurukshetra. There were intense negotiations that happened, and then Bagga was brought back to Delhi by the Delhi police. Times Now earlier spoke to Tajinder Singh Bagga's mother, who makes a fervent appeal to the Chief Minister of Punjab, Bhagwant Mann, asking him not to abuse law. एक दिन पहले या कुछ दिन पहले ऐसा कोई मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि पुलिस आकर अरेस्ट कर ले जाएगी, क्योंकि तस्वीरें ऐसे आ रही है कि खींचकर उनका लेकर गई हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी जी, क्योंकि तस्वीरें और भी आ रही हैं घर के अंदर से कि किस तरह से उनको खींचकर लेकर गई हैं घर से बाहर। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर इन्फॉर्मेशन, आप सोचो, अगर इन्फॉर्मेशन होती कि मेरे बेटे के साथ ऐसा होगा तो क्या एक दिन पहले मैं यहाँ आती? तो आप कह रही हैं कि आप अपने दोस्तों और नेबर से भी बात कर रही हैं, क्या उनकी तरफ से जानकारी मिली है मैम? मुझे अभी कोई जानकारी नहीं मिली। मुझे टीवी से ही पता लगा है कि उन्हें कुरुक्षेत्र में रोका गया है, और वहां पे अब क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या बात हो रही है, ये तो बाद में जब न्यूज में आएगा तो पता लगेगा कि क्या हो रहा है। ये तो मुझे कोई न्यूज अभी नहीं मिली अभी तक। नहीं मैम, क्योंकि आप गुस्से में हैं और आपको बहुत फिक्र भी है अपने बेटे के बारे में, क्योंकि पता नहीं था कि इस तरह से हो जाएगा कुछ। लेकिन आपको कुछ कहना है, जिस तरीके से उनको उठा ले गई है पुलिस वहां की, पंजाब की, कितने सारे लोग सुबह आ गए थे घर पर? 10-12 बंदे तो अंदर आए थे, बाकी बाहर थे। और जैसे कि सीसीटीवी के जो न्यूज वगैरह में आ रही हैं कि हमारे घर के, हमारे एरिया के आसपास पूरी पंजाब पुलिस की गाड़ियां घिरी हुई थी, ये जो टीवी में देखने में आ रही हैं, तो यही सब चीजें हैं कि ऐसा क्या क्राइम किया था उसने जो इस तरह से गुंडागर्दी की, उसको नौबत आ गई थी केजरीवाल को। और Questions being raised not just by the family but also by the opposition party BJP and leaders from the Congress. Navjot Singh Sidhu actually saying that Punjab government is using police to settle personal political scores. We take a very quick break. All the latest updates on the other side.